So hi everyone, my name is Darsh Katiyar और अब हम करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 698 डेव 2 का प्रॉब्लम नंबर 8 टर्टल एंड गुड स्ट्रिंग्स। और अब ये वाला हम प्रॉब्लम हिंदी में सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सोचना है और तुम्हें समझाने के लिए अच्छे से मैं हिंदी में बताता हूँ तो वो बेटर रहेगा। तो लेट्स जस्ट रीड द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले प्रॉब्लम का नाम है टर्टल एंड गुड स्ट्रिंग्स। तो कभी कभार या फिर बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम के नाम में ही प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना ये दिया होता है कभी बार कि ऐसे ही कुछ लिखा है कि पैलिंड्रोम या फिर की कीबोर्ड लिखा और उसके बीच के लेटर्स मिसिंग है। सो लाइक समथिंग दैट इज लाइक अ हिंट फॉर द प्रॉब्लम, राइट। उसके बाद हमें टाइम लिमिट हमेशा देखनी है कि कितनी है उस प्रॉब्लम की। उससे हमें ये पता लगता है कि हम ब्रूट फोर्स वाली चीज़ें इस पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। सो अगर 1 जैसे सेकंड दे रखा है टाइम, ऐसे क्वेश्चंस पे यूजुअली ब्रूट फोर्स नहीं होता है यूजुअली, राइट। बट ऑल्सो मतलब हमें वो भी देखना होता है कि कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं। तो इस क्वेश्चन की ऑल्दो कंस्ट्रेंट्स हमें दिख रही हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे कि काफ़ी कम है, तो शायद इस पे ब्रूट फोर्स भी लग जाए। तो वी नेवर नो। और मेमोरी वैसे देखने की ज़रूरत नहीं होती, मेमोरी इज़ ऑलवेज 256। और ये बहुत रेयर केसेस में आप एक्सीड करते हो जब आप बहुत ही ज़्यादा ब्रूट फोर्स लगा रहे हो और सारी मेमोरी यूज़ कर रहे हो, स्टोरेज करे जा रहे हो और ऐसा कुछ सॉल्यूशन आपने बनाया है, ठीक है। सो हाँ, अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सारी बकवास करने के बाद। So turtle thinks a string is a good string if there exists a sequence of strings as t1, t2, dot tk, मतलब t1 से tk तक string and k is an arbitrary, हाँ इसमें थोड़ा वर्ड में हो जाता हूँ यार हमेशा, arbitrary integer such that k is greater than 2 और s equals to t1 plus t2 plus dot tk तक, where plus represent the concatenation operation, and for example s है ये और ये हो गया इसका t1 एंड ये हो गया इसका t2 और इसको प्लस से concatenate करा है, ठीक है, राइट। मतलब बेसिकली वैसे इसमें लिखा ये है कि हमने concatenate करा है, लेकिन हमें एक स्ट्रिंग को तोड़ना है, ठीक है। वो भी हम देखते हैं कैसे तोड़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है फॉर ऑल आई greater than equals to 1 and smaller than j, and for all j smaller than I and greater than equals to k, the first character of ti isn't equal to the last character of tj, here. And turtle is given a string s consisting of lowercase Latin letters. Please tell him whether the string is a good string or not, ठीक है। तो अभी यार तुम, हमने जैसे पढ़ा पूरा क्वेश्चन तो हमें ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, राइट। ऐसे ऐसा लगा होगा कईयों को, ठीक है। तो देखो ये एक चीज़ होती है जो तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत वो कर सकती है, ओवरवेल्म कि यार ये क्या लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव कोडिंग में, मतलब कुछ होता है भारी भारी मैथ्स मैथ्स, देखो क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू कुछ कुछ लिख दिया, प्लस प्लस डॉट कुछ भी लगा दिया, ठीक है। लेकिन मतलब ये थोड़ी मैथमेटिकल लैंग्वेज है जो तुम्हें धीरे धीरे आ जाएगी, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इससे कोई डरने की बात नहीं है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, इसका एक्सप्लेनेशन आई विल गिव इन इजी वर्ड्स तो तुम्हें बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। उससे पहले लेट्स लुक एट द कंस्ट्रेंट, राइट। तो सबसे पहले हमें इनपुट में दिया होगा द फर्स्ट टाइम दैट इज द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, ठीक है। तो टी 500 से नीचे ही है तो ज़्यादा नहीं है, 500 के इक्वल या नीचे ही है, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है। द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंसिस्ट सिंगल इंटीजर n, ठीक है। तो n भी मतलब साइज ऑफ स्ट्रिंग है तो वो 2 से 100 के बीच में है, ये भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बड़ी स्ट्रिंग भी नहीं है और ज़्यादा टेस्ट केसेस भी नहीं है, तो मे भी ऐसा कुछ हो सकता है हम ब्रूट फोर्स लगा लें, ठीक है। ऑल्दो हम देखेंगे कि इसमें हमें नहीं लगाना पड़ रहा है तो दैट इज़ वेरी नाइस। उसके बाद हमें बस आउटपुट येस या नो में करना है। हमारे पास एक एग्जांपल है कि 2 इसमें n है, ए हमारे पास स्ट्रिंग है और 4 तो वैसे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हैं, तो ये एक सिंगल टेस्ट केस ये वाला है, फिर ये सेकंड टेस्ट केस है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्ट भी हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हाँ रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, ठीक है। और आप नो कैसे भी लिख सकते हो यार, छोटा एन छोटा नो ओ मतलब, और मतलब कैसे भी कैप्स और स्मॉल में कैसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे एस भी ऐसे दे रखा है, ठीक है, तो इट डज नॉट मैटर।
और बेसिकली आपको हर एक टेस्ट केस के बाद नो या येस के बाद एक एंड लाइन कैरेक्टर देना है, मतलब नीचे वाली लाइन में आपको नेक्स्ट प्रिंट करना है, ठीक है। तो एक बार मैं अब आपको फाइनली क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल वर्ड्स में। ये मेरा सॉल्यूशन आ गया, सॉरी भाई, तुम्हें पता लग गया कि मैंने पहले से करके रखा है, लेकिन ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ यार, ठीक है। तो ये मेरा नाम लिखा हुआ है। बेसिकली हमें करना क्या है, स्ट्रिंग्स को हमें दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में तोड़ना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ तोड़ दूँ स्ट्रिंग को और यहाँ से तोड़ूँ, ठीक है, मैंने 3 भागों में या हिस्सों में इसे तोड़ लिया है, ठीक है। एंड व्हाट वी हैव टू डू कि हमें पहले स्ट्रिंग के मतलब पहला टूटे हुए भाग को देखना है। हाँ, हिस्से को देखना है, ज़्यादा हिंदी हो गई यार, ठीक है। हिस्से को देखना है, फिर हमें इसमें देखना है कि जो पहला एलिमेंट है इसका, वो जो रेस्ट के बचे हुए एलिमेंट्स हैं, मतलब हिस्से हैं, उनके लास्ट एलिमेंट के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये ए इस टी के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। और ये ए ये आर के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। और हमें ये करना है कि ये इक्वल हो बेसिकली, ठीक है। तो अच्छा, नहीं नहीं नहीं, हमें ऑपोजिट करना है। ये इक्वल ना हो, ठीक है, राइट। तो हमें ये देखना है कि ये ए इस टी के इक्वल ना हो और ये ए इस आर के इक्वल ना हो। ऐसे ही फॉर नेक्स्ट हमें देखना है एच आर के इक्वल ना हो। अब हम ये क्यों नहीं देख रहे कि ये एच इस एस के इक्वल नहीं है कि नहीं है। हम ये इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि इसका इंडेक्स, फॉर एग्जांपल इस वाले का इंडेक्स 0 हो जाएगा, इस वाले का इंडेक्स 1 हो जाएगा, इसका इंडेक्स 2 हो जाएगा, ठीक है। सो जिसका हम फर्स्ट एलिमेंट देख रहे हैं वो आई होता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन में दिया है, मैंने नहीं बोला है। और जिसका आगे का देखना है वो जे है, एंड आई इज ऑलवेज स्मॉलर देन जे, ठीक है। तो जे हमेशा बड़ा होगा इसे, तो मतलब आई के सबसे सारे राइट वाले एलिमेंट्स देखने हैं, हमने उसको नहीं देखना है और उसके सारे लेफ्ट वाले एलिमेंट्स को नहीं देखना है, ठीक है। तो इसलिए हम एस से कंपेयर नहीं कर रहे हैं ये एच, हम बस एच आर से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही आई हम किसी से आगे कंपेयर कर नहीं सकते, तो इसे हम ऐसे छोड़ देंगे वैसे। तो हमें बस यही करना है। तो इस वैसे जो मैंने सॉल्यूशन इसका करा है उसमें देखो हो रहा है, क्योंकि a इज नॉट इक्वल्स टू t, ऑल्सो a इज नॉट इक्वल्स टू r, ऑल्सो h इज नॉट इक्वल्स टू r। सो इसका सॉल्यूशन का इसका आंसर यस में आएगा, ठीक है। तो बस हमें यही करना है। अच्छा, और स्ट्रिंग्स बेसिकली हमें गिवन होगी, और हमें बेसिकली ये तो मैंने 3 हिस्से करे हैं, ठीक है। वी कैन डू 2 हाफ्स, मतलब हाफ ज़रूरी नहीं, मतलब 2 हिस्से कर सकते हैं हम लोग, या 4 या 5 या 6, ठीक है। कितने भी कर सकते हैं, जितने लेटर्स हैं उतने भी कर सकते हैं, ऐसे इंडिविजुअल हर एक का। जैसे मैंने इंडिविजुअल करा नहीं, राइट। ये भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब पहली बार, हाँ, तो पहले रुक जाओ, पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। सो ये जो लाइन है, सबसे पहली ये लाइन k इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसका मतलब ये है कि जो हमें हिस्से करने हैं बेसिकली उनके नंबर 2 से या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। एक तो अकेला हिस्सा होता ही नहीं है, ठीक है। फिर हमने तोड़ी नहीं स्ट्रिंग बेसिकली। और ये s इक्वल्स टू टी वन प्लस टी टू, ये जो लिखा है ये लिखा है कि जो तुम्हारी स्ट्रिंग है और टी इक्वल्स टू ये है, बस इनके बीच में अगर तुम ऐड लगा दोगे, मतलब कॉन्कैटेनेट कर दोगे इन्हें। ऑल्दो हमें कॉन्कैटेनेट करना नहीं है, जैसे कि मैंने बताया, हमें तो तोड़ना है एक तरीके से, ठीक है? तो और ये थर्ड लाइन जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है इसमें से, कि फॉर ईच आई एंड जे वेयर आई इज स्मॉलर देन जे, ठीक है। आई स्मॉलर देन जे, एंड ऑल्सो आई बिलोंग, मतलब आई यहाँ से ए से लेके आर तक कुछ भी हो सकता है, जो कि इसकी भाषा में दिया हुआ है आई बिलोंग्स टू 1 to k। अब के नंबर ऑफ हिस्से हैं, तो फिर इसमें अगर हम स्टार्ट करेंगे तो वी कैन गिव इंडेक्स, अगर 1 इंडेक्सिंग करेंगे तो इसको 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, ठीक है। तो के यहाँ पे 11 हो गया एक तरीके से। तो आई ए से लेके आर तक होगा, मतलब 1 इंडेक्स से लेके 11th इंडेक्स तक, ठीक है। और ऐसे ही जे भी 1 इंडेक्स से लेके 11th इंडेक्स तक हो सकता है, लेकिन ऑलवेज जे इज ग्रेटर देन आई, बस इतना ही, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो मैं तुम्हें बता रहा था कि
वो प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में बताया था, इसमें मैं बता नहीं सकता। ओके, क्योंकि मैंने सारे इंडिविजुअल कर लिए हैं, तो ये चीज़ करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। अब 2 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ, ठीक है। ये वाला मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में सोचना, तो हम सोचते हैं यार कितने हिस्से करें हम, इन हाउ मेनी पार्ट शुड वी डिवाइड एनी स्ट्रिंग, ठीक है। कि इसको करके देखें, या फिर ऐसा करें कि पहले 2 हिस्से करके देखें, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मतलब जितने भी हो सकते हैं। इसमें जैसे 2 हो सकता है, और एक हो सकती नहीं, एक तो नहीं कर सकते हम लोग, 3 हो सकते हैं, राइट। इसमें 4 हो सकते हैं, और एक्चुअली 3 होंगे, 2 का, 3 का, एक्चुअली हाँ हाँ हाँ, बेसिकली 2 का और 3 का। एंड वी कैन मेक समथिंग लाइक ए बी और बी सी, ये कर सकते हैं। या तो ए बी सी एंड बी, और वी कैन डू बी सी बी एंड ए। एंड इसमें तो यार हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसमें एक देखने और सोचने वाली बात है, इफ वी टेक नमन एज एन एग्जाम्पल, लेट्स नॉट टेक नमन, नमन तो पैलिंड्रोम है भाई, ध्रुव ले लेते हैं, ठीक है। तो ध्रुव है, मान लो मैंने इसके 2 हिस्से करे, सो वी हैव टू, अगर मैंने बस 2 हिस्से करे, तो वी हैव टू ओनली चेक कि ये वाला लेटर इस वाले लेटर के इक्वल है कि नहीं है, राइट। तो क्या हम ये चीज़ हर एक स्ट्रिंग में कर सकते हैं? तो हाँ भाई, हम तो हर एक स्ट्रिंग में काइंड ऑफ ये चीज़ कर सकते हैं। मान लो मैंने ये वाली स्ट्रिंग ली, ठीक है, इसको मैंने कहीं से भी तोड़ दिया, मैं कहीं से भी तोड़ सकता हूँ रैंडमली, मान लो यहाँ से तोड़ दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये वाला लेटर इस वाले लेटर के इक्वल है कि नहीं है। नहीं है, मतलब ये गुड है स्ट्रिंग। जैसे ध्रुव में भी नहीं था, तो ध्रुव वॉज अ गुड स्ट्रिंग, राइट। और इसमें भी हम कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमें ये तो हमने एक कंडीशन से ही मतलब पता लगा लिया कि हाँ ये सही है। अब हम ये देखते हैं कि क्या हम इसको इससे ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करते हैं इसी स्ट्रिंग को, तो कोई हमें फ़ायदा, या 2 ही हिस्सों से काम कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, समझ गए। तो मान लो मैंने रैंडमली इतने हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ठीक है, राइट। तो हमें ये वाला तो देखना ही पड़ेगा कि ये ए इस सी के इक्वल है कि नहीं, राइट। हमेशा हमें ये देखना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये चीज़ और देखनी पड़ेगी कि ये वाला सी इसके इक्वल है कि नहीं, ये वाला सी इसके इक्वल है कि नहीं, जो कि हो रहा है। सो इस केस में आंसर, मतलब वैसे तो यस है इसका आंसर, लेकिन अगर आप ऐसे डिवाइड करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो इसका नो आएगा आंसर। और हर केस में चाहे हम कितने भी डिवीजन बना लें, हमें बस स्ट्रिंग का पहला एलिमेंट उसके लास्ट एलिमेंट से मैच करके देखना है कि इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर भी यही है कि हमें बस स्ट्रिंग का पहला एलिमेंट उठाना है और उसका लास्ट एलिमेंट देखना है। और अगर वो दोनों इक्वल नहीं है, तो आंसर हमेशा यस आएगा। और अगर इक्वल है, तो देखो अगर हम 2 हिस्से भी करेंगे, देन ए इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, तो ये तो नो ही आएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा हम कर लेंगे, अगर फॉर एग्जांपल हमने 4 5 कर लिया, हाँ, ऐसे कर सकते हैं, हाँ। तो हम ये देख रहे हैं कि ये वाला अभी भी हमें चेक करना पड़ेगा। पहली पहली चीज़ हमें चेक करनी ही है कि ये वाला नंबर, मतलब ये वाला फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट के इक्वल है कि नहीं, और ये है, तो फिर यहाँ पे भी आंसर नो आएगा। तो हमें 2 से ज़्यादा डिवीजन करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। और हमें डिवीजन करना कोड में नहीं है, हमें अपने दिमाग में, मतलब शीट पे जैसे मैंने यहाँ पे करा वहाँ पे करना है। और हमें तो बस ये बताना है कि ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जो कि हम बस 2 डिवीजन से बता सकते हैं। और 2 डिवीजन से हमें ये पता लगा है कि बस हमें फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट देखना है, राइट। तो फिर इसका आंसर बेसिकली बहुत ईजी हो जाएगा, जो कि ये रहा। सो ये मैंने ऊपर जो चीज़ें लिखी हैं, इसे अभी के लिए इग्नोर करिए, अगर मतलब तुम लोगों ने कॉम्पिटिटिव नहीं करी है। बस मेन पार्ट ये है, यहाँ से हाँ, लेट्स लुक एट दिस फ्रॉम हियर, कि हमारे पास टी टेस्ट केस थे, हमने सी इन टी करा, फिर उसके बाद हमने टी टेस्ट केस के लिए वाइल टी माइनस माइनस लिखा है, ठीक है। तो हर बार टी माइनस माइनस होता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर 5 टेस्ट केस हैं, तो 5 माइनस माइनस इस बार 4 हो जाएगा, फिर ये पूरा लूप चलेगा। फिर 4 माइनस माइनस 3 हो जाएगा, फिर ये पूरा लूप चलेगा। 3 माइनस माइनस 2 हो जाएगा, पूरा लूप चलेगा। 1 हो जाएगा, पूरा लूप चलेगा। 0 हो जाएगा, और 0 होने के बाद भी लूप चलेगा, ठीक है। और अगली बारी में 0 होएगा, तो फिर वो चलेगा नहीं बेसिकली, ठीक है। आओ, क्या भाई, मैं तो हाँ, तो बेसिकली
फिर हम अंदर आए, हमने n लिया, साइज ऑफ क्या बोलते हैं स्ट्रिंग, उसके बाद हमने स्ट्रिंग s ली, ठीक है। उसके बाद हमने देखा स्ट्रिंग का पहला एलिमेंट उसके लास्ट एलिमेंट के इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो बेसिकली नो आउटपुट करना है, हमें एन लाइन कैरेक्टर देना है, स्पेस मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर। एंड अगर नहीं है तो फिर एल्स में ये सही अपना। इसको सबमिट करके देख लेते हैं भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट्स गो। बस मैंने कर रखा है यार, ये प्रॉब्लम ऑब्वियसली अभी मैं करा रहा हूँ तो होएगा ही सबमिट। पता लगा नहीं हुआ भाई, मज़ा आ जाएगा। तो नीचे भी दिखा रखा है, कर रखा है। हाँ तो हो गया भाई। तो बेसिकली एक ग्रीडी प्रॉब्लम की तरह एक ट्रीट हुई, लेकिन इसमें ये है कि ज़्यादातर 800 लेवल क्वेश्चन जो होते हैं कोड फोर्सेस में, मतलब जो सबसे इजीएस्ट लेवल क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको कोडिंग ज़्यादा नहीं करनी होती है। कोडिंग मतलब कॉम्पिटिटिव है ही नहीं ज़्यादा कोडिंग के लिए। कॉम्पिटिटिव है मतलब आपको दिमाग लगाना है, बेसिकली कुछ ऑब्जर्वेशंस करनी है। जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस करी कि बस 2 हाफ से काम चल रहा है, और उन हाफ में भी हम देख रहे हैं कि हर बार हमें फर्स्ट और लास्ट ही कंपेयर करना है। तो हाफ तो हमें करना नहीं है, तो बस फर्स्ट और लास्ट ही कंपेयर करना है, क्योंकि मतलब बेसिकली हाफ हमें करके उसको प्रिंट नहीं करना है हाफ्स को, हमें बस ये बताना है कि हाँ इस तरीके से हम हाफ कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और स्ट्रिंग को मतलब ऐसे T1 T2 के इसके फॉर्म में कर सकते हैं कि नहीं, राइट। आई 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 थिंक मैंने अच्छा एक्सप्लेन करा है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन भी कर दिया होगा मे बी आपको समझ भी नहीं आया होगा, लेकिन लेट्स सी भाई। मैंने तो अपनी तरफ से पूरा अटेम्प्ट करा है, ठीक है। तो मैंने ये समझ आया तो यार, अगर तुम कॉलेज से देख रहे हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। बाहर से देख रहे हो तो मैं तो वैसे भी इतना कुछ पढ़ाने वाला होता नहीं, मेरे को भी नहीं इतना आता। ये क्यों बोल दिया मैंने, ठीक है चलो रख लेना है भी वीडियो में। हिंदी वाली पहले देख लेना, इंग्लिश वाले में बोर हो जाओगे। So hi everyone, my name is Arsh Katyar and today we will be doing question number 2540 of LeetCode, that is minimum common value. So the question states that given two integer arrays nums1 and nums2 sorted in non-decreasing order, return the minimum integer common to both the arrays. And if there is no common integer amongst nums1 and nums2, return -1. Right? And also a note is given that an integer is said to be common to nums1 and nums2 if both arrays have at least one occurrence of that integer. Basically, we have to find one integer that is common to both, but at the same time, it has to be the smallest. Okay, cut, cut. So before we actually start to think about the solution of this problem, let's look at a phrase that is written here in the question, that is non-decreasing order. So why is it written non-decreasing order here? Why not increasing order? Is it not the same increasing and not decreasing? The answer is actually no. It is not the same. For example, if I have a series like 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, yeah, then this series is called as an strictly increasing order, yeah, strictly increasing order series. But at the same time, a series like 2, 4, 4, and 6 is not called as a strictly increasing series. It's called as a non-decreasing series, because each element in the second series is followed by an element that is either greater or equal to the previous element. So this is non-decreasing. But in the first series, each element is followed by an element that is actually always greater than the previous element. So the first series is strictly increasing and the second one is non-decreasing. So that is the basic difference between strictly increasing and non-decreasing. And both of these series can be collectively said as increasing. So that's why rather than mentioning like increasing, it is written specifically non-decreasing. So if we start to think about the solution for this problem, the most primitive solution that like brute force solution that everyone gets in their mind is like select any of these arrays. For example, I select nums1, then I take the first element and find if it is present in the nums2 array, right? Then if it is not present, then I take the second element of nums1 and find that in nums2, and like subsequently I find the third, fourth, fifth. Basically, I have to go until I find the element in nums2 that is also in nums1, right? And if I don't find, I return -1. So this way we can like find the smallest element that is common to both, right? So
Yeah, this is the first solution. Let's just implement it in code. Okay. So first let's look at what I'm doing with these two for loops and this if statement and what is this return minus one. Okay. So for the with the first for loop, that is the outer for loop, I am iterating the first array, right? This nums one. So I'm checking if this element. So for each element, right, for this and this, I'm adding I plus plus. So I'm iterating through the outer array, right? And for each element of the outer array, like for example nums one, I am using this inner array that represents the second array, right? Every element of the second array. And then I am checking if nums one's I is present in nums one's j, like the value with indexes. And if it is present, then I have to return nums one I, or either I can return nums two j, because they both will be the same, so it doesn't matter. And so yeah, and if the program's executions uh, just gets finished after the for loop, outer for loop, and still we didn't find the number, then we have to simply return minus one, because we have iterated both the arrays and found out that no element is common to both the arrays, right? So it actually like accepts the test cases, but it does not uh, submits, because like time limit is actually exceeded for bigger test cases. So this is the most primitive solution, right? We have to like upstep and think about some optimization to submit it, right? So yeah, we'll do that, but this solution is like actually correct and not wrong. If the time limit is not there, then it passes. So for the second solution, we have to find out an optimization in the existing code. So what we can actually do. So let's see here. I have these arrays 1 to 3, 1 to 5, 6, and 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12. So what I'm trying to do is I'm trying to, let's assume I'm finding 5 in this array, right? 3, 4, 7, and this one. So what I'm doing is seeing if this 5 is equals to this 3, then I'm seeing if this 5 is equal to 4, then I'm seeing if this 5 is equal to 7, then 8, then 9, then 10, then 12. Even though when I pass a digit bigger than 5 itself, I already know that all the next numbers would be bigger than 5 and not equal to 5, right? So we do not need to check that. So whenever like an element in the second array is bigger than the element that we are finding for in the first array, then we actually break out of the loop and we start looking for the next element, that is 6. So that is exactly what we are doing here with this if, right? So I'll just explain it in a bit. Yeah. So what we're doing is if nums1 I is smaller than nums2 j, whenever this happens, we break out of this inner for loop, right? And then we start looking for the next element, right, in nums2. So let's just try to submit it and see if it works. Let's submit. So yeah, it actually submits, but you can see its runtime is obviously not so good. But this solution works, completely works. So it is correct, but we'll also look at some more better methods to do it. So before moving to the next solution, we should look at what the time complexities were for the last two solutions. So for the most primitive solution, what time complexity did we have? We had big of m times n, where m stands for the size of array nums1 and n stands for size of array nums2. So what we were actually doing is for every element in nums1, we were going through every element in nums2 and finding if that was equal. So here we are taking the worst case, right? So it would be m times n, because for 1 we are looking for 2 and 4. For 2 we're looking 2 and 4. For 3 we're looking at 2 and 4. So it
just multiplies 3 times 2, that becomes like 6. So for this particular case, that would be 6, right? So this one was for the first solution. First solution, right? Let's do this. Next, for the second solution. So for the second solution, we did something similar, but we were breaking our loops whenever a element in nums2 was found that was bigger than the element we were finding for in nums1, right? So it was not actually every time n. So it was always, we cannot say always, but yeah, it was at many times less than n. So at most times it would be less than, how to write it? It would be, no, it would be less than big of m times n. Let me write it in small. Yeah, so it would be always smaller than big of n times n. Yeah. So now let's just look at the third solution that is completely different from the previous two approaches. So for the third solution, let's assume we have two arrays nums1, 1, 3, 4, 5, 6, and nums2, 2, 4, 6, 7. And we have two pointers, the pointers I and j. And these pointers are not like the pointers we use to dereference and all use memory in C++. These are like integers, but we're using them to point to indexes of the arrays, right? So like the 0th index is point right now by I and j. So what we are trying to do is we're checking if nums1 I is equals to nums2 j, and if it is equal, then we return nums1 I, right? But if nums1 I is smaller than nums2 j, which is actually what it is right here, then we increment the pointer for nums1, yeah. So we shift it to the second, how to shift it, yeah, we pointed to the second element, right? Then again we check if nums1 I is equals to nums2 j, and if it is equal, then we return nums1 I or nums2 j. But if nums1 I is smaller to nums2 j, then we increment I again. But if nums1 I is greater than nums2 j, then we this time increment the j index, right? Yeah. So this is actually what we'll do for the whole array, and we'll do it until I does not reach the end of this array, or j does not reach the end of this array. Uh, yeah. So, and whenever we reach the end of one array, we'll stop our search because we cannot go and find another like integer to compare with. For example, if we start comparing and if we have a situation like this, where I is pointing to 5 and j is pointing to 7, that is the last element of nums2. And we have to actually increase, let's just make it this. We have to increase j here because 4 is smaller than 5, right? But if I do this, then the array ends, right? Then I just return -1. So this is what we'll be basically doing, right? So while doing this solution, the worst time in which I can find the number is actually big O of m plus n, because we traversed the nums1 array once and we traversed the nums2 array once. So it is not actually multiplying but just adding. So it is obviously better than the previous two solutions. But how did I actually get to this solution? How did I think of this two pointer kind of approach? तो तो बोल दिया मैंने बीच में, हिंदी आ गई, चल कोई नहीं. So what I thought was, if we see at the first position of both the arrays and I look at the bigger number, if I have a bigger number and I look at the bigger number,
then I already know that I have to move the smaller number of the other array, like one index forward, right? I have to make it bigger, right? Then again, if I compare these two, then I know that there is not an element to present in nums1, right? So I have to find if 3 is present in nums2. That may be present right here, right? So I just increment j. हो जा भाई. So I increment j here, and likewise I just do it for the whole array, and the time complexity is basically big O of m plus n. That is way better than previously what we were doing. That was big O of m times n and big O of less than big O of m times n, right? So for the third solution, the time complexity would be m plus n, m plus n. So this is the code that we have. I have the pointers 1 and 2 that are actually not pointers but just integer indicating the index of nums1 and nums2, right? And then I've written the condition for while I index does not go beyond the reach of its like size, and same here for j. Then we check if it nums1 I is equals to nums2 j, and if it is, then we return nums1 I. Else if we check if nums1 I is smaller than nums2 j, and if it is, then we increment I. And else for the other case, that would be nums2 j is smaller than nums1 I, we increment j plus plus, right? And when we end with this while loop, when we come out of this while loop, that would be only in one case when we like iterated through m and n, which would be big of m plus n, and we did not find any equal numbers. So then we will return simply -1. So we do not want to write any if statement here. That is not actually needed. We can simply write return -1, and I've already run it. Let's submit it and see. Yeah, so it actually gets submitted with a better time complexity than what we were getting previously, like right here, somewhere right here. But still being better, but this is not the best solution of this problem. The best solution actually involves binary search. So let's look at that now. No, no, no. So the solution, which is through the binary search, is very similar to the first initial brute force solution that we were thinking. So what we were doing there was we were taking nums1 I, its first element, and we were seeing if it was present anywhere in nums2. Then if we didn't find that, we take the second element of nums1 and we see if it was present in nums2, right? So basically we'll do the same thing, but rather than linearly searching in this array, we'll just apply binary search, right? That would just be so amazing. Also, we can only apply binary search here because both of these nums1 and nums2 are ordered. But even if they were not ordered, we could just simply order a array that was not ordered, right? And apply binary search to that, but it would increase the time complexity, obviously. One more thing, we'll try to like apply binary search to that array that is actually bigger in size. For example, if nums1 is 100 and nums2 is 10, we'll apply binary search to nums1. So it reduces its time, right? So for the fourth we will have big O of, let's have m, m log n, log n, m log n, where 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 भाई क्या है, where n is actually bigger than m, right?
the thing that we are applying binary search has to be of bigger length, right? Also, this log would be of base 2. How could I subscript? पता नहीं यार, मेरे को subscript नहीं करना आता, लेकिन this log will be of base 2. And why would this happen? Why is it not base 10? This is because each time when we are doing binary search, we are like reducing our search space by a half, right? But if we were reducing it by 1/10, then we would write base 10, right? So for the first solution, what we're doing is, first of all, we're seeing which array is bigger. So we're saying if nums1 is bigger than nums2 or not. So uh, okay. So if nums1 is smaller than nums2, obviously we'll apply binary search in nums2, right? So we are iterating through nums1. So for each element in nums1, we are finding that element in nums2, right? Via binary search. So we are having a binary search that returns a function binary search up here that returns an integer which is stored in res, right? And it returns -1 if the search is not successful, we have not found the element, right? So but if also the parameters first, we are first passing the element to be found, that is nums1 I, and we're like passing the array in which it has to be found. uh, and also this is not actually an array, it's vector, but it is an array. मतलब बोलने का अलग अलग तरीका है, फर्क नहीं पड़ता यार. So uh, so if it is returning not -1, so if it is actually returning a value, that would be the value that is common in both the arrays, so we'll just return that. And in the else case, yeah, and in the else case, when nums2 is actually smaller than nums1, then we are doing the opposite of those arrays and finding in nums1 rather than doing binary search in nums2, right? And we are doing the same thing here. And if we just go through this if else statement completely, like we complete it and still we have not returned anything, then obviously we have like done binary search in one of the area and we have not found the matching elements, right? So then simply we can return -1, and we do not need to check again for anything because we know that we have not found any one element that is common between both of these arrays, right? So this is the final solution, and as I said, this would be big of m times log n, where n is greater than m. If m was like greater than n, then these two m and n will swap places. Yeah, so